जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. So today's lecture we are going to start, you can say that it's related to the previous couple of lectures. So if you remember that we have learned about the couple of formulas of algebra. So these are called the initial formulas that अगर आपको याद हो तो हमने जो फार्मूले सीखे थे उसमें जो पहला फार्मूला था वो था आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर और वो इक्वल सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. और जो दूसरा फार्मूला था उसमें आपके पास दो वेरिएबल जो थे वो माइनस हो रहे थे और उनका होल स्क्वायर लिया था हमने. अगर आपको याद हो तो a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square minus 2ab. So these are the two formulas that we have already learned about these. So आज की इस लेक्चर में अब हम कुछ नया फार्मूला सीखने जा रहे हैं जिसमें अगर आप हेडिंग को चेक करें दैट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ द अलजेब्रिक फार्मूलाज. सो अगर ये दो फार्मूलाज जो आपको दिए गए हैं ये आपस में ऐड हो रहे हों और सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो ये एक नए फार्मूले की शक्ल में आपके पास आते हैं. सपोज जैसा कि अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर is equal to 2 into a square plus b square. So अगर आप देखें तो ये प्लस a प्लस बी स्क्वायर और ये a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और ये a माइनस बी होल स्क्वायर और ये a minus b whole square, when we add these two formulas with each other, so we get the answer 2 into a square plus b square. So these formulas, we will see that how can we find after taking the squares of these two formulas, that how can we get the right hand side. So अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में इस शक्ल में लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये a प्लस बी को आपने इस तरीके से लिख दिया एंड देन प्लस का साइन है उसके साथ अब a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये a माइनस बी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. सो a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड. ये चीज़ आपने याद रखनी है. पिछले लेक्चर्स में हम पिछली वीडियोस में ये चीज़ सीख चुके हैं कि हाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू दिस.
तो अब इसको हमने इस तरीके से लिख लिया. Just suppose this one is left hand side. So left hand side हमने ली और left hand side को इस तरीके से लिख दिया. So अब आगे इस algebraic expression को अगर आप देखें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, that if you see that a square, is there any a square in this expression? That, yeah, you can see that there is another a square. So a square plus a square is equal to 2a square. अब b square को देखें. b square इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लस b square and plus b square will be equal to 2b square. And then the third thing, that 2ab with the plus sign, and there is a 2ab with a minus sign. So same values, when they subtract with each other, then they will cancel. So ये और ये आपस में cancel हो जाएंगे. अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बच गया, द 2a square plus 2b square. अब अगर आप इन दो टर्म्स में देखें तो आपके पास कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही. सो 2 is the number that is common in these two terms. So 2 आप कॉमन ले लें और बाकी क्या आपके पास बच गया, a square plus b square. So if you see that 2a into a square plus b square is equals to this. So when two formulas with the different signs, when added with each other, they will be equal to 2 into a square plus b square. So it means that left hand side, when we simplify the thing, we have got the answer which is equals to right hand side. ठीक है जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपको समझ ना आई हो. If you have seen my previous videos, so then this is the most easiest thing that you can solve and you get the answer. अब एक और एग्जांपल, एक और फार्मूले की शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसमें हम अगर ये जो दो एक्सप्रेशंस थे इनको हम प्लस कर रहे हैं तो दे विल इक्वल टू दिस थिंग. एंड व्हेन वी subtract these two expressions, then what we get the answer, that a plus b whole square minus a minus b whole square, that will be equal to 4ab. So let's see that how can we get the left hand side is equals to right hand side. Same process you have to do, the same process as you have done or I have done in this previous process. So but remember that sign is different. So minus signs is the most important thing, because the minus sign, when always will multiply with the other signs, then it will change the whole scenario. So अगर आप देखें इस
दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, जिस तरह हमने ऊपर वाली चीज़ों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। आप इस तरह ले लें लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a minus b whole square. So when you put the formula of a plus b whole square, then you can write it as a square plus b square plus 2ab, and then the sign minus, and then write this formula in expanded form, that a minus b always equals to, that I have already told you in this lecture and in my couple of previous lectures, that a minus b always equal to square of first plus square of second minus 2 into first into second. So इसकी जगह पे अब आप लिखेंगे square of first plus square of second minus 2 into first into second. अब क्या करेंगे जी, ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं टू सिंप्लीफाई द होल एक्सप्रेशन. देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab उसी तरह आ जाएगा, एंड देन माइनस. अब ये माइनस जो है वो इन सारे साइंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये माइनस आई हैव टोल्ड यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विल चेंज द होल थिंग. सो माइनस जब इस a स्क्वायर से साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये वाला माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको चेंज कर देगा माइनस में. माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, और ये b स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस में चेंज कर देगा. सो ये बन जाएगा 2ab प्लस साइन के साथ. इट मीन्स व्हेन माइनस any minus signs multiply with the other signs, then it will change the signs. अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पे जो साइंस थे, इस a के साथ प्लस का साइन था, यहाँ पे ये भी प्लस था, ये माइनस था, तो इस माइनस ने जो इस ब्रैकेट के अंदर जो साइंस थे उन सब साइंस को चेंज कर दिया. अब अगर आप देखें, टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इफ यू सी here is a square and here is minus a, so a square plus a square minus a square will be cancelled with each other. इसका मतलब ये है कि दो एक जैसी चीज़ें जब माइनस हो रही होती हैं तो वो आंसर उनका ज़ीरो हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती हैं. जस्ट लाइक कैस if I say that 2 minus 2, so 2 minus 2 will always give the answer 0. I will say that like that, 3 minus 3 0, 4 minus 4 0, same as it is. यहाँ पे a square minus a square will be cancelled. Now check the b square with the plus sign. You can find the minus b square over here. So these are the two same things with different signs. Plus and minus, when they will subtract with each other, they will be cancelled. Now you can see this last term, plus 2ab and plus 2ab. So these are the two same things, so two same variables with the multiplying with each other, a multiplied by b, a multiplied by b, and the coefficient of 2
the first term of the coefficient of first term is equal to 2, and the second one is also 2. So they will add with each other. So 2ab and 2ab मिलके आपके पास 4ab हो जाएगा. तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हम सिंप्लीफाई करते हुए हम इस राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए. So that's the thing. So I'm going to conclude the lecture in just few sentences that if two formulas like a plus b whole square and a minus b whole square, if they will add with each other, that will be equal to 2 into a square plus b square. And when they will subtract with each other, so the answer will be 4ab. So in today's lecture, I have told you about that how can we get the left hand side into right hand side, that how they are equal with each other. So अब अगर आपको सिंपली कोई पूछता है a plus b square plus a minus b whole square, what will be the answer or what will be the equal to? So you can say directly that 2 into a square plus b square. So that's the process, that's the solution, that how can we get the right hand side by simplify left hand side. And then they will be, if they will subtract with each other, तो आपके पास जो राइट हैंड साइड में या इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो 4ab होगा, जो कि हमने इस प्रोसेस के तहत आपको साबित करके दे दिया. उम्मीद है कि you will understand the things that I have told you in this lecture. So in our next lecture, I'm going to give you some examples or some kind of questions related to these two formulas. That the first formula is this and the second is this. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले दिनों में जो चीज़ें हैं वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच सकें और आप उनको इजीली समझ सकें. अपना ध्यान रखिएगा. इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. खुदा हाफिज़.